Assalamualaikum students, open your book of SST Lesson 2 World Climate. In this, have you opened your books? In this lesson, we study about climate of the world. First, we define the weather and the climate. Weather is the day-to-day condition and climate is the weather condition in an area over a long period. Weather is like yesterday was rainy day, today is sunny day, tomorrow will be cloudy day. This is weather, a change day by day, right? But climate is a long term period weather. For example, Saudi Arabia has a hot climate throughout the year. The climate in a hot way. Arctic climate is coldest climate. Arctic and Antarctic, these two polar regions throughout the year, they are cold. Less rain, more cold, and coldest area throughout the year. So this is the difference between weather and climate. Now, how to effects of climate? It affects of climate on us. It affects our daily routine, eating habits, wearing clothes, indoor and outdoor activities. In summer, we prefer to wear light-weighted clothes. We prefer to eat cold drinks, soft drinks, milkshakes, juices, more water intake, and light foods to eat to digest it. But in some winter, we prefer to go on warm side, hot side. We drink hot teas, hot coffees, hot chocolate milk, and hot foods to eat to warm our body and keep us energy. And especially the activities in summer, we prefer to go outside in the evening time, but in winter we prefer to go outside in daytime, because in evening time it's very cold, but daytime the loss of sunshine to us. So these are the things that affect the climate on our daily routine and life in different season. Now come to the climatic zone. We divided our earth into three main regions: polar region, temperate region, tropical region. Look at the picture number 1. Look at the board, kids. This is the earth. Four basic directions: north, south, east and west. Our earth divided into two hemisphere. Northern hemisphere, this is the northern hemisphere, and this is southern hemisphere. Okay, we divided our climatic zone in three main parts: tropical zone, temperate zone, polar region. In southern as well, tropical, temperate, polar. Tropical zone near to equator, like this is northern tropical region, this is southern tropical region. Okay, then temperate, and these are the polar regions. In northern polar region there is Arctic, and in the southern polar region there is Antarctic. Okay, first come to the tropical areas are the hot and wet, सेम एज वेल. जो नियर एक्वेटर के करीब एरियाज हैं, लाइक ट्रॉपिकल एरियाज, इन नॉर्दर्न इट कॉल्ड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड इन साउदर्न इट कॉल्ड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. ये दोनों एरियाज में जो है वो हॉट भी हैं और वेट भी हैं, बिकॉज इट्स नियर टू सी, और फिर सी से जो मॉइस्चराइज़र हवा में आता है वो उस एरिया को बहुत ओवर मॉइस्चराइज कर देता है, और वो वेट भी होता है सेम एज हॉट भी होता है. तो ये दोनों मिक्सचर है इन दोनों एरियाज़ का. और बेसिकली ट्रॉपिकल एरियाज़ आर माइल्डर. जो बिल्कुल इक्वेटर के करीब लैंड है वो माइल्ड. चलो,
नियर टू इक्वेटर जो एरियाज, जो कंट्रीज और जो एरियाज होते हैं, उनके वेदर माइल्ड होता है, ना ज़्यादा कोल्ड होता है ना ज़्यादा हॉट होता है. Temperate areas like define like cold and milder hot weather, but the polar regions totally throughout the coldest areas of the world, and Antarctic is more colder than Arctic region, and these are the three main climatic zones. Now come back to their climate of Pakistan. First of all, Pakistan lies in Tropic of Cancer in north. Pakistan lies Tropic of Cancer, नॉर्दर्न एरिया में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास है. पाकिस्तान हैज़ 4 seasons: summer, winter, autumn, spring. Means Pakistan has different flavors of seasons. Pakistan's physical features are different: snowy and dry mountain, deserts, plain, plateau, highland, valleys, river connected with the Arabian Sea. So Pakistan is the blessing with the different physical features, different season, and different climatic regions. Like it's different to each other, and this help us to grow different and various crops. ये हमें इस तरह मदद देता है कि पाकिस्तान में अप्रॉक्सीमेटली तकरीबन तमाम फ्रूट्स ग्रो होते हैं, क्रॉप्स ग्रो होती हैं, हमें ड्राई फ्रूट्स भी हमारे एक पार्ट से मिलते हैं. तो वी हैव रिच इन मिनरल्स एज वेल. सो पाकिस्तान इज़ वेरी blessed with the climate region. Now come to the greenhouse gases. What is greenhouse gas? Obviously this is a new topic for you. Now look at the page, look at the picture on the 2 of the boat. This is the greenhouse gases. Okay, this is the earth and this is the atmosphere. हमारे ज़मीन के ऊपर एक ओजोन लेयर है जिसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं, जो हमारी ज़मीन का एक सिक्योरिटी है, ताकि जो स्पेस से हमें बहुत सी चीज़ों से वो हमें सेफ रखती है. ये आपकी ये जो ब्लू कलर की एटमॉस्फेयर ओजोन लेयर है. लेकिन क्योंकि ज़मीन में इतनी ज़्यादा पोल्यूशन हमने क्रिएट कर दी है, इतनी ज़्यादा पोल्यूशन है कि वो हमारी ओजोन लेयर को डिफेक्ट कर रही है, उसको डैमेज कर रही है. सो ग्रीन हाउस गैसेस के जब हमारे सन से रेडिएशन ज़मीन की तरफ आती है, यानी सनलाइट जब ज़मीन की तरफ आती है, तो अर्थ को उनमें से कुछ परसेंट सनलाइट को अब्जॉर्ब कर लेती है, कुछ सम सन रेडिएशन गोज बैक टू द स्पेस. कुछ सनलाइट जो है वो वापस स्पेस में चली जाती है, लेकिन कुछ रेडिएशन जो है वो हमारी एटमॉस्फेयर अब्जॉर्ब कर लेती. स्टार्ट. ग्रीन हाउस गैसेस, अगर ये सिस्टम ना हो तो हमारी ज़मीन का जो सेंटीग्रेड है वो -17 हो जाए और वो बहुत ज़्यादा सर्द हो जाए. और विदाउट दैट, कि ऑब्वियसली अगर वो इतनी ज़्यादा कोल्ड हो जाएगी, हमारी चिल हो जाएगी अर्थ, then how we survive? So this system is very important for us. Now climatic change. If we talk about the climatic change, this climatic change, chalo, I hope you understand the greenhouse gases. Okay, now after the climatic zone, climate of Pakistan and greenhouses gases, now come to the climatic change. Climatic change को मैं अगर इस तरह आपको कहूँ कि आफ्टर 20th century, increasing the fossil fuels, पेट्रोलियम, कोल, गैसेस की एक्सेसिव यूज़ की वजह से, मतलब आपको मालूम है कि आप कितनी व्हीकल्स हो गई हैं, फैक्ट्रीज कितनी ज़्यादा हैं, और फॉसल फ्यूल्स का एक्सेसिव यूज़ हम कर रहे हैं. इसकी वजह से और पोल्यूशन क्रिएट हो रही है, और इस पोल्यूशन की वजह से हमारा जो है वो ग्रीन हाउस गैसेस का सिस्टम भी अफेक्ट हो रहा है, क्योंकि इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो डे बाय डे इंक्रीज कर रही है और ऑक्सीजन की प्रोडक्शन कम हो गई है, क्योंकि
कटिंग द ट्रीज की वजह से भी ऑक्सीजन प्रोडक्शन इज लेस एंड इंक्रीजिंग द कार्बन डाइऑक्साइड मोर. तो इन तमाम चीज़ों की वजह से जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं वो अफेक्ट हो रही हैं, जिसकी वजह से क्लाइमेटिक चेंज आ रहा है. मीन्स कि जो एरियाज़ हॉट थे एक टाइम पे अब वो हॉटर हो गए हैं, जो एरियाज़ हॉटर थे वो हॉटेस्ट हो गए हैं, और इसी तरह कोल्डेस्ट एरिया कोल्डर हो रहे हैं और वो कोल्डर एरिया कोल्ड हो रहे हैं, और कोल्ड से फिर वो माइल्डर हो रहे हैं. यानी कि वो बेसिकली carbon dioxide is getting added to the atmosphere and not being replaced with the oxygen, and increase of carbon dioxide in the atmosphere is that the number of forest on earth is decreasing. कार्बन डाइऑक्साइड जो इंक्रीज हो रहा है उसकी रीज़न ये है कि एक तो सबसे बड़ी रीज़न हम ट्रीज़ को कट डाउन कर रहे हैं. जब हम ट्रीज़ को कट डाउन करते हैं तो हमारी ऑक्सीजन की प्रोडक्शन भी अफेक्ट होती है, और हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है? ट्रीज से मिलती है ना. ट्रीज को हम कट डाउन कर रहे हैं, अब ऑक्सीजन की प्रोडक्शन कम हो गई है, और कार्बन डाइऑक्साइड हमारी कौन अब्जॉर्ब करता है? ट्रीज. अब ट्रीज कट डाउन हो रहे हैं तो ऑब्वियसली कार्बन डाइऑक्साइड भी अब्जॉर्ब उस तरह नहीं हो रही, तो वो फिर हमारी एटमॉस्फेयर यानी हमारी ओजोन लेयर को अफेक्ट करती है. जब हमारी ओजोन लेयर अफेक्ट होती है, जो जैसे मैंने आपको ग्रीन हाउस गैसेस का सिस्टम बताया था कि कुछ रेडिएशन सनलाइट की एक देखें, जो ये वाली रेडिएशन है जो ओजोन लेयर से अप है वो बहुत फास्ट है एंड दे आर वेरी शार्प, राइट. बट जब वो ओजोन लेयर को क्रॉस करके हमारी अर्थ पे आती है तो वो ज़रा स्लो हो जाती है. स्लो इन द सेंस क्योंकि हीट जो है वो कम हो जाती है, और कुछ फिर हमारी अर्थ अपने अकॉर्डिंग टू नीड वो अब्जॉर्ब करती है, कुछ हमारी ओजोन लेयर अब्जॉर्ब करती है और बाकी स्पेस में जा रही है. लेकिन डैमेजिंग ऑफ ओजोन लेयर की रीजंस की वजह से जो अब हमारी रेस ज़मीन पे आ रही है वो ज़्यादा सख्त आ रही है. मतलब अब धूप जो हमें सनलाइट जो हमें डे टाइम मिलती है वो एज कंपेयर टू प्रीवियस 20 ईयर्स ज़्यादा शार्प है, ज़्यादा हार्ड है. सो दैट्स वाई इन दिस सेंस इट डैमेज आवर अर्थ एज वेल. 1 I hope I clear your all points about lesson number 2, weather climate, effects of climate, climatic zone, climate of Pakistan, greenhouses, and effects of greenhouses is obviously climatic change. So fossil fuels, petroleum, coal and gases, and cutting trees and increasing the carbon dioxide. So I hope that all the lesson is cleared now. Now take out your book for underlining the important points and the facts of the lesson. Okay students, now open your books, lesson number 2 for the highlighted parts. Some students have this book, so open it, okay, and highlighted the important parts. So weather is the day-to-day condition. First paragraph of the first lesson. Weather is the day-to-day condition of heat and cold, humidity, cloudiness, dryness, or rain in any place. Climate is the weather condition in an area over a long period of the time. Underline? Okay. The climate in different places on the earth is not the same. A place close to the North Pole or the South Pole is very cold throughout the year. Okay. Underline all these lines. A place close to the equator is usually very hot throughout the year. Now, second paragraph, effects of climate. This line, in a warm climate, people can take
part in outdoor and water sports. In cold climate, people can still take part in outdoor sports, but they mostly prefer to stay indoors and enjoy indoor games. Where there is a lot of rainfall and many trees, people use wood to make their houses. Some crops grow well in a cold climate while others grow well in a warm climate. Done. Wheat grows well in milder climates and rice grow well in warm, wet, tropical climates. 2 lines down, the food habits of people depend on the crops that are grown locally. Clear? Now, this is the temperature topic. Now, come to the climate of Pakistan. This is the map. This is the equator. This is the Tropic of Capricorn. This is the Tropic of Cancer. Northern Hemisphere, Southern Hemisphere. This is the Arctic Circle, and this is the Antarctic Circle, and this is the Arctic Circle. These are the key of the map. Pink color shows very hot and very wet near to equator. Look at there. Hot and wet, purple color. These are the hot and wet lands. These are the warm and wet. The brown shows. Cool and dry, green. Very cold, white areas. ये जितने भी white area है, especially in an Arctic Circle and Arctic Circle, these are the very cold areas of Earth. Now underline the climate of Pakistan. Please open the topic, the climate of Pakistan. Pakistan lies just to the north of the Tropic of Cancer. Okay, the hottest month is usually June. Clear? This chart is important, so write with it IMP, important. Okay. Second paragraph of the climate of Pakistan. The temperature in Quetta has been as low as -60 degrees centigrade in winters. Jacobabad once recorded a temperature of 53 centigrade degree. Clear? Now turn the page. Okay, underline the climate of Pakistan का ये third paragraph है. Clear? The amount of rainfall, the direction and frequency of winds, amounts of water vapor, humidity in the air and other factors. Clear? Now last 2 lines. High up in the mountain it is very cold, so even a place close to the equator can be cold if it is in the mountain areas. Mountain areas और highlands अगर इक्वेटर के पास भी हैं और वो काफ़ी हाइट पे हैं, अबाउट 6,000-7,000 मीटर्स हाइट है उनकी, तो वो कोल्ड ही होंगी, उनके टॉप एरियाज कोल्ड ही होंगे. आइदर इज इन इक्वेटर, टेम्परेट और in tropical areas. Okay, so mountains are the highland areas, so it always be cold. Okay, climate and climate change. In this book, the older book, there is no climate change. The greenhouse effect or effect of greenhouse gases, burning fossil fuel, the deforestation. राइट ये टॉपिक इस वाली बुक में नहीं होंगे, सो आप यहाँ से ही इसको अंडरलाइन कर लें और अपने पास नोट डाउन कर लें. क्लाइमेट चेंज अंडरलाइन.
Climate change is the change in the climatic patterns of a region or on a global scale. This is the definition of climate change. Okay. Now last three, 1, 2, 3 line downs. Underline, the use of fossil fuel has been the main contributor to climate change. Agriculture and deforestations and the manufacture of cement, chemicals and metals are also contributed to the increase in greenhouse gas. Clear? Now come to the greenhouse gas effect. Underline, greenhouse gas allows sunlight to pass through the atmosphere and reach the earth's surface. Some of the sunlight is captured as heat on the earth and some of it goes back towards space. The trapping of heat inside the atmosphere is called the greenhouse effect. 2 lines down, underline, without greenhouse gas, the earth would be very chilly with the temperature falling to 17 minus 17 centigrade. As I show in the picture कि किस तरह sun rays ज़मीन एटमॉस्फेयर ओजोन लेयर में ज़मीन में अब्जॉर्ब होती हैं, फिर वापस वो जाती हैं, तो कुछ परसेंट वो ओजोन लेयर में अब्जॉर्ब हो जाती है जो हमारी एटमॉस्फेयर लेयर है, और कुछ स्पेस में वापस चली जाती हैं. सो कम टू द इफेक्ट्स ऑफ ग्रीन हाउस. अंडरलाइन, changing the amount of greenhouse gases in the atmosphere can lead to a warming or cooling of the climate system. जो ग्रीन हाउस गैसेस में चेंजिंग हो रही है फॉर डिफरेंट कॉजेस, उससे जो है वो वार्मिंग और कूलिंग इश्यूज आ रहे हैं. मतलब अगर मैं इसको इस तरह करंट सिचुएशन के साथ आपको डिस्कस करूं, लाइक इस्लामाबाद में, कि इस बार 1 नवंबर तक इतनी सर्दी नहीं थी, फिर दिसंबर में सर्दी स्टार्ट हुई इस्लामाबाद में, एंड ग्रेजुअली वो बहुत चिल थी. मतलब इस्लामाबाद में नॉर्मली इतनी सर्दी नहीं होती जितनी इस दफ़ा थी. बहुत ज़्यादा सख्त सर्दी थी, स्पेशली दिसंबर के लास्ट 2 वीक्स एंड जनवरी के फर्स्ट 3 वीक्स. सो वेरी चिली वेदर. सो और अभी तक मार्च अप्रैल स्टार्ट हो गया, लेकिन फर्स्ट वीक में भी थोड़ा बहुत जो वेदर है वो हमारा माइल्ड है, वार्म नहीं है, माइल्ड है. सो सेकेंड पैराग्राफ अंडरलाइन. Third line, which is creating global warming and bringing about climate change. Done. Now come to the burning of fossil fuel. The burning of fossil fuels such as petroleum, coal and natural gas produce carbon dioxide. Clear? Okay. 1 line down, coal is used as an energy resource or in power plant. Factories and mills that run on fossil fuel release carbon dioxide and other greenhouse gases. Done. 2 lines down, the amount of carbon dioxide in the air is increasing. Clear? Now deforestation. Another reason for the increasing of carbon dioxide in the atmosphere is that the number of forests on earth is decreasing. 3 lines down, trees acts as the lungs of the earth. They take in carbon dioxide and release oxygen in the air. This was the air gets purified. 2 lines down, carbon dioxide is getting added to the atmosphere and not being replaced with oxygen. Underline these lines. Now turn the page. Ways you can help reduce the effects. हम किस तरह अपने इसको सेट कर सकते हैं क्लाइमेट चेंज को. यूज़ लेस इलेक्ट्रिसिटी, save water by turning off taps, plants more trees because trees absorb carbon dioxide, recycle paper, metals, glass and some plastic can be recycled, buy less plastic. हम अपने आप बहुत सी चीज़ों को सही करके जो है वो क्लाइमेट चेंज को बेटर कर सकते हैं. अंडरलाइन दीज लाइन एज वेल, जो मैंने रीड आउट अभी की हैं. अंडरलाइन ऑल दीज लाइन्स. दीज आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ द लेसन. यू मस्ट learn it, you must understand it and remember it because it's important for your CBT and objective tests. Exercise of this lesson in the next part.